Hello, so a very warm salutations to all. So the topic for today is perimeter, and the aim of today's class is to understand perimeter in very easy words and to have a clear conceptual understanding of what do you mean by a perimeter. So according to the definition, we can say that the perimeter of any closed plane figure is the distance covered along its boundary when you go around it once. So what does it mean? Let's take an example of a closed plane figure, that is a rectangle. So this is a rectangle, and suppose its length is 12 and breadth is 8. So what would be the perimeter of for this figure? For that, we just need to calculate the distance of its boundary. That is what would be the total distance if you move along the boundary of this figure. Now we know that, just a moment. So what would be the total distance that is covered along the boundary of this figure? And we know that the property of a rectangle is that the opposite sides are going to be equal. So a b would be equal to c d, and AC, this side, would be equal to this side, BD. This is given, this is known as the property of a rectangle. A closed figure is known as a rectangle only when the opposite sides are equal. So now, what will be the perimeter? We just have to look at the distance covered along the boundary of this figure. So suppose if we start from A, we are going from A to B. So we covered a distance of 12 meter, because this is given as the length is 12 meter. Now we will go to B to D. So we covered a distance of 8 meter. Now, from D to C, C to D, as in a rectangle AB is equal to CD, this would again be 12, and AC would again be 8. So it means it would be 12 plus 8. And we get the answer 12 plus 8, 20. 12 plus 8, 20. 20 plus 20 is 40 meter. Simple as that. To get the perimeter of this rectangle, we just need to calculate the length or the distance covered when we are moving along the boundary of this figure. So that's why when we add this 12 plus 8, then again this 12, this length, and then this 8. So here we get 40 meter. Now, what is the formula? Just a moment. So based upon this, we get the formula as 2 into L plus B. So this formula is not rocket science. We have just applied what we are doing on this figure. Why is it 2 into L plus B? Because length from A to B is 12, and then again from C to D is 12. So we are calculating the length twice, and then the breadth from B to D is 8, and then again from C to A, this is also 8.
This is also 8. So we are calculating 8 twice. So we are just doing nothing but just calculating the length and the breadth twice. That's why we get the formula as 2 into L plus B. So it will be 2 into 12 plus 8 according to this figure, which will give the answer as, what would be the answer? 2 into 20, that is 40. So without applying the formula, we just simply calculate the distance covered along the boundary from A to B, B to D, D to C, and C to A. We get 12 plus 8, 20, plus 12, 32, plus 8, 40. Now we have just put this into our formula, that is twice the length and the breadth, because the rectangle, in a rectangle opposite sides are equal. So we are calculating the length from A to B as 12, and then doubling it because we have to calculate C to D also. So 12 into 2, and then breadth also 2 times, BD and AC. So we get the formula as 2 into L plus B. I hope this clarify your concept about why the perimeter, or the formula for the perimeter of a rectangle is 2 into L plus B. So now let us understand the concept with the help of one more example. So this is a rectangle, ये एक rectangle है. It has 4 sides as we can see, and we know that the rectangle opposite sides are equal. Opposite side जो है वो equal होते हैं rectangle में. तो अगर ए बी 12 है तो सी डी भी 12 होगा. This would also be 12. और बी डी अगर 6 है तो ए सी भी 6 होगा. यही प्रॉपर्टी होती है रेक्टेंगल की. अब आपको ये फिगर मिल रहा है एंड यू हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर. सो मैंने शुरू में ही कहा था कि पेरीमीटर कुछ नहीं होता. पेरीमीटर इज जस्ट द डिस्टेंस कवर्ड अलोंग द बाउंड्री. तो अगर हम बाउंड्री पे जा रहे हैं ए से बी तक, बी से डी तक, एंड डी से सी तक, और सी से ए तक, ये सारी डिस्टेंस जो हम कवर करेंगे, ए से शुरू हुए वापस ए पे आ गए, यही पेरीमीटर होता है किसी भी क्लोज फिगर में. दिस इज ओनली द पेरीमीटर. व्हाट इज द डिस्टेंस बीइंग कवर्ड? तो हम देखते हैं कि अगर हम ए से बी पे जा रहे हैं तो कितनी डिस्टेंस कवर्ड हो रही है. ए से बी पे अगर हम जा रहे हैं, सो वी कैन सी कि ए से बी गए तो 12 हुई. तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी जो है 12 प्लस, ऐड करिए, बी से डी आए, यहाँ आए. अब तो बी से डी आए तो कितना हुआ, 6 मीटर चले, 12 प्लस 6. फिर डी से सी गए, फिर 12 क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है. और फिर सी से आए तो फिर 6 क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है. तो हमको जो आंसर मिलेगा वो होगा 12 प्लस 6 दैट इज 18 प्लस 12 दैट इज 30 प्लस 6 दैट इज 36. तो 36 मीटर वुड बी आवर पेरीमीटर. अब इसको फॉर्मूला लगा के अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो सबने पढ़ा है स्कूल में, क्लास में, बुक्स में लिखा होता है कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 इंटू एल plus b, that is 2 into length plus breadth. इस क्वेश्चन में लेंथ जो है वो हमारी है 12 मीटर, अब ब्रेथ जो है हमारी वो है 6 मीटर. सो इट वुड बी 2 into 12 plus 6, 18, and 2 into 18 is nothing but 36. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि फॉर्मूला भी जो है वो एक लॉजिक पे बैठता है. सो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम जो कर रहे हैं कि हम ए से शुरू करके
चल रहे हैं, बी तक आते हैं, फिर बी से डी, डी से सी और सी से ए, तो हम ये देख पा रहे हैं कि हम ए से बी, सी से डी सेम डिस्टेंस को दो बार कवर कर रहे हैं, क्योंकि यही रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो लेंथ सेम है दोनों बार, ए से बी जितना हमने कवर किया और सी से डी जितना हमने कवर किया। वही जब बी से डी जो इतना कवर करेंगे हम, सेम लेंथ हम ए से सी भी कवर करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर है और ये जो डिस्टेंस है वो इसके बराबर है या इक्वल है। तो इसलिए हम कुछ नहीं करते हैं, बस लेंथ प्लस ब्रेथ 12 प्लस 6 कर लिया, 18 आ गया, उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि दोनों चीज दो बार हो रही है, ट्वाइस हो रही है, लेंथ भी दो बार और ब्रेथ भी दो बार। इसलिए फॉर्मूला है 2 × L + B। लेंथ और ब्रेथ को ऐड करेंगे और उसको दुगना कर देंगे या उसको ट्वाइस कर देंगे। दैट इज व्हाई द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 × L + B। वेरी सिंपल। सो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तो पहले आप कंसेप्चुअली समझें कि 2 × L + B क्यों हो रहा है। क्योंकि रेक्टेंगल का, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ, और हमको क्या करना है, पूरी बाउंड्री पे कवर करना है। यहाँ से चलेंगे ए से तो बी तक आना है, फिर बी से डी तक, फिर डी से सी तक और सी से ए तक। तो ए से बी तक हम चलें 12 मीटर, फिर बी से डी चलें 6 मीटर, फिर डी से सी चलेंगे तो फिर 12 मीटर चलेंगे, क्योंकि ए बी और सी डी फिर से मैं बोल रहा हूँ इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और फिर सी से ए चलेंगे तो फिर से वही डी बी डी की डिस्टेंस कवर्ड होगी 6, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम 12 दो बार चल रहे हैं तो 12 × 2 कर लेंगे, और 6 दो बार चल रहे हैं तो 6 × 2 कर लेंगे, बस सिंपल है। 2 × L + B, दैट्स वाई पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का अंदर के ये जो है इससे कोई लेना देना नहीं होता है। दिस इज एरिया, ये अलग कंसेप्ट है। जब भी आपको पेरीमीटर की बात आए तो सिर्फ एक चीज याद रखिए कि पेरीमीटर का जब भी क्वेश्चन है तो वी आर डीलिंग विथ जस्ट द आउटसाइड बाउंड्री, नथिंग एल्स। अगर पेरीमीटर का सवाल है तो बस ये हिस्सा आउटसाइड बाउंड्री, अंदर के एरिया से हमको कोई मतलब नहीं है। दिस नो। So I hope this makes things clear, and I hope you all get the understanding of what is perimeter and why the formula for perimeter of a rectangle is 2 × L + B. Now same logic with the square also. Let me erase this, give me a moment. Now this is a square, this is not a rectangle, this is a square. So what I said last time in the case of rectangle, it would hold true for square also. कि मैंने क्या कहा था, रेक्टेंगल में एक कोई भी आपको फिगर आए, कोई टेंशन नहीं है लेना है, बस ये समझना है कि आउटसाइड बाउंड्री का जो डिस्टेंस है उस बात हो रही है। तो आउटसाइड बाउंड्री इस केस में क्या होगी, ये जैसे रेक्टेंगल का था सेम, ए से बी, बी से डी, डी से सी और सी से ए, बस ये इसकी क्या डिस्टेंस है हमें यही बताना है, तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। अब स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी होती है ये आप सबको पता होगा, अभी तक आप सब लोग ये पढ़ चुके होंगे, दैट ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, मस्ट बी इक्वल। सब चारों के चारों साइड ए बी, बी डी, डी सी, सी ए, ये चारों साइड की लेंथ इक्वल होगी तभी ये स्क्वायर होता है, नहीं तो ये स्क्वायर होता ही नहीं। तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। क्लियर है? हम अभी एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, मैं फिर से बोलूंगा, ये पेरीमीटर की बात हो रही। एरिया की बात होती तो हम अंदर की बात करते। ये एरिया होता है, दैट विल बी द टॉपिक ऑफ आवर नेक्स्ट वीडियो। फिलहाल हम पेरीमीटर की बात कर रहे हैं। तो पेरीमीटर में सिर्फ और सिर्फ हमको क्या, आउटसाइड बाउंड्री से लेना देना है और किसी से चीज से भी नहीं। सो आउटसाइड बाउंड्री हमारी जो है वो ये है, ठीक है।
ए से बी, बी से डी, डी से सी और सी से ए। तो यहाँ केस अगर हम अपना बिना किसी फॉर्मूला के बनाएंगे तो बस चारों साइड है, चारों साइड को आप ऐड कर दीजिए। 5 प्लस बी डी भी 5 है, प्लस सी डी भी 5 है, प्लस ए सी भी 5 है। तो पेरीमीटर हमारा क्या निकल गया? 5 प्लस 5 10 प्लस 5 15 प्लस 5 20 मीटर वुड बी आवर पेरीमीटर। नाउ फॉर्मूला क्या है? 4 इंटू लेंथ ऑफ दिस एनी गिवन साइड, कोई भी एक साइड का लेंथ 4 इंटू एस अगर आप कर लीजिए। अगर एक साइड को आप एस मान रहे हैं, ए बी को अगर आप एस मान रहे हैं, 4 इंटू एस। तो यहाँ क्या है? साइड ऑफ अ लेंथ की, एक लेंथ की साइड क्या है? सॉरी, लेंथ ऑफ द साइड क्या है? ए बी की 5 है, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 होता है 20। फॉर्मूला ने क्या किया? बस 4 टाइम्स कर दिया। वहां रेक्टेंगल में 2 इंटू एल प्लस बी कर रहे थे, लेंथ को ट्वाइस कर रहे थे, ब्रेथ को ट्वाइस कर रहे थे। यहां हमने क्या किया? एक साइड है वही 4 बार रिपीट हो रहा है, तो बस 4 इंटू साइड 4 टाइम से मल्टीप्लाई करें। यही फॉर्मूला है। फॉर्मूला इज नो रॉकेट साइंस और समथिंग लाइक दैट, इट्स जस्ट प्लेन लॉजिक। तो हमने देखा आज के वीडियो में कि स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर हम कितनी आसानी से ढूंढ सकते हैं। एंड वी विल कंटिन्यू विद दिस सीरीज। आई होप टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू। Until then, see you. Have a great day ahead. We will meet again in the next video. Thank you.